आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले। We have four people who wants to declare Shahada. So they can come to the stage. Okay. One second. It's very easy to become a citizen of the Muslim nation. All you have to say is the password, which Sheikh Zakir inshallah will teach it to our new brothers. As we say, we are all brothers in humanity. We are all humans, whatever religion we are. But just like citizenship, you know, he's from this country or that country. When they declare this very nice password, which is known to everybody, it's not a password, then they gain a special brotherhood, which is the brotherhood in Islam. Come on. इस शख्स ने कहा तो हम कर सकते हैं, वो स्टेज पर आ सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड इंतज़ार करें। शहरी बनना बहुत आसान है, जो अल्लाह हमारे नए भाइयों को सिखाएगा। मुस्लिम कौम आपको सिर्फ इतना कहना है कि पासवर्ड इंसानियत है। हम सब इंसान हैं, हम किसी भी मज़हब के हों, लेकिन शरीयत की तरह आप जानते हैं कि वो इस मुल्क या उस मुल्क से है। जब वो ये बहुत अच्छा ऐलान करते हैं, पासवर्ड बन जाते हैं, तो वो हासिल कर लेते हैं जो इस्लाम में ब्रॉड है। बस माइक्रोफोन से मोहतात रहें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से कहा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके पास कोई सवाल है। वो लड़का बोला हाँ। Do you believe? And do you believe that Prophet Muhammad is a messenger of God? Do you believe? Do you believe that Jesus, peace be upon him, is he God or is he a messenger? Messenger. What do you believe? Messenger, mashallah. Messenger? Mashallah. Yes, that is one of the fundamentals of faith, that we believe that Jesus, Christ, peace be upon him, is not God but is the messenger of God. I would like to ask you. He has one question, the last question. Fine, you have a question? Yeah. Good evening, Dr. Zakir. Assalamu alaikum. So, beginning from me, I was raised Christian. Believe me or not, from I woke up from the childhood and become a mature, I didn't open Bible. That is really true. And everyone, and even until now. But someone came to me, then introduced me about Islam. So one thing left in me, since last 15 days, I started to read Quran and search about Islam. So one thing that I want to know regarding the Islam and regarding become a Muslim, I prepared some questions. I prepared some notes here, which is I found in the YouTube, in other articles in the internet, that it says these words came from Prophet Muhammad, peace upon him. So I want to read this. Then I want an answer from Dr. Zakir regarding clarifications. I don't have any doubt to become a Muslim. I believe in one religion. But then I want to clarify first before my heart open and accept the Islam and become a Muslim. Sure. Can I have the question, please? Yeah. So Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Whoever killed a person having a treaty with the Muslims shall not smell the smell of paradise, through its smell is perceived from the distance of the 40 years. Another thing, if anyone kills a man who grants protection prematurely, Allah will forbid him to enter the paradise. Another thing, Allah the Almighty tortures those who torture people in this life." So my question is there any Can human? you repeat the third? Can you repeat the second and third hadith, please? The second. Can you come in the front here, please? Okay. I'm looking, yes. The second is,
if anyone kills a man who he grants protection prematurely, Allah will forbid him to enter paradise. So my question for this statement from Prophet Muhammad, peace be upon him, is there any written in the book that... Can I request that the parent can take the child out, please? गुड इवनिंग डॉक्टर ज़ाकिर, अस्सलाम वालेकुम। तो मुझसे शुरू करके मेरी परवरिश हुई। ईसाई लड़के ने कहा, मुझ पर यकीन करो या ना करो, मैं बचपन से और बालिग होकर बाइबल नहीं खोली, जो वाक़या सच है और सब, और यहाँ तक कि अभी, लेकिन फिर कोई मेरे पास आया, मुतारफ़ कराया। मैं इस्लाम के बारे में तो पिछले 15 से मेरे अंदर एक चीज़ रह गई। दिन कुरान पढ़ने और इस्लाम के बारे में तलाश करने लगे। इसलिए एक बात जो मैं इस्लाम और इसके मुतल्लिक़ जानना चाहता हूँ, मैंने यूट्यूब में इंटरनेट के दूसरे मज़मीन में कि ये अल्फाज कहता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया है। इसकी बुनियाद पर यूट्यूब में दूसरे मज़मीन में इंटरनेट के ये अल्फाज कहते हैं, तो ये पढ़ना चाहता हूँ। फिर मैं ये चाहता हूँ कि वज़ाते मुझे मुसलमान बनने में कोई शक नहीं है, जिस पर मैं यकीन रखता हूँ, एक मज़हब। लेकिन फिर पहले वाज़ा करना चाहता हूँ, मेरा दिल खोल कर इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाऊँ, तो क्या मैं ये हासिल कर सकता हूँ? इस लड़के ने कहा कि बराए मेहरबानी, आपने फरमाया जिसने किसी ऐसे शख्स को कत्ल किया जिसका मुसलमानों से मुआहदा हुआ, इसे कत्ल नहीं किया जाएगा। जन्नत की खुशबू और इसकी खुशबू से दूर से महसूस होती है। 40 साल। एक और चीज़, अगर कोई किसी ऐसे शख्स को मारता है जो अता करता है हिफाजत वक्त से पहले, अल्लाह इस पर जन्नत में दाखिल होने से एक और चीज़ मना कर देगा। अल्लाह सुब्हाना ताला इज़्ज़त देने वालों को अज़ाब देता है इस ज़िंदगी में। लोग तो मेरा सवाल है कि कोई इंसान बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि दूसरी और तीसरी हदीस को दोहराएं, क्या आप दोहरा सकते हैं? तो लड़के ने कहा, दूसरा ये कि अगर कोई किसी ऐसे शख्स को मार डाले जिसे वो वक्त से पहले तोफ़ज़ फराहम करता है, तो अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल करेगा। तो तब बच्चे के रोने की आवाज़ आई। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस लड़के का सवाल काटते हुए वालिदैन से मुखातिब होकर कहा, आइए आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर आपको मज़ीद बताएंगे। Can I request that the parent can take the child out, please? I request the father, can you take the child down, please? Jazakallah shukr. I request the volunteers. I believe there are less volunteers here. If there are volunteers here, if you avoid me telling on the stage, your ears should be sharp enough. It is mentioned very clearly that children below the age of 8 should not be allowed here. So you see to it that the volunteers, the ears should be sharp enough. The moment you hear the cry the first time, the second time it should not be heard. So I request the volunteers to be active, and I request the parents themselves, you do it voluntary, because the Sharia says let a small loss take place to prevent a big loss. We are having this program is being telecast to 100 million people. So please cooperate. You wouldn't like to be the cause of 100 million people not hearing correctly. So I request the parents, the moment your child cries, see to it that you move your child outside the theatre, please. Jazakallah. Can you continue? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने वालिदैन से मुखातिब होकर कहा कि अब रज़ाकारों की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि यहाँ कम रज़ाकार हैं। अगर यहाँ रज़ाकार मौजूद हैं, अगर आप मुझे स्टेज पर बताने से गुरेज़ करते हैं, आपके कान इतने तेज़ होने चाहिए कि बच्चों का जिक्र बहुत वाज़ा है। उम्र से कम उम्र को यहाँ इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, लिहाजा आप उसे देखते हैं कि रज़ाकारों साल तेज़ होना चाहिए। काफ़ी लम्हा जब आप रोना सुनते हैं, पहले बार दूसरी बार ना सुना जाए, लिहाजा रज़ाकारों से दरख्वास्त है कि वो मुआतरक रहें और ख़ुद वालिदैन से दरख्वास्त करें ये रज़ाकाराना तौर पर करें, क्योंकि शरीयत कहती है कि एक छोटा सा नुकसान होने दो। हमें ये बड़ा नुकसान हो रहा है कि ये प्रोग्राम 100 मिलियन लोगों तक टेलीकास्ट हो चुका है। 100 मिलियन का सबब बनना पसंद नहीं करेंगे, लोग ठीक से नहीं सुनते, इसलिए मैं वालिदैन से दरख्वास्त कर रहा हूँ, मसीह और इसको देखें कि आप अपनी हरकत करें। बच्चा मसीह और इसको देखें कि आप अपनी हरकत करें। थिएटर के बाहर बच्चा बराए करम आप जारी रख सकते हैं, बराए करम ठीक है। Okay, back to my question. So
if there is any written in the book that, or in the Quran says that there is a one person, a human being, sent by God or give the authority that God that kills a person, whatever this person has sinned or even the heavy sins. So according as what I said, Allah Almighty tortures the person who tortures human beings. So that is my question. What's your question? I didn't understand. Is there any human being that Allah gives permission to kill a person? Just what we did, just what happened Now and understood. nowadays. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को कहा कि आप अपना सवाल जारी रखें। So that is my question. What's your question? I didn't understand. Is there any human being that Allah gives permission to kill a person? Just what we did, just what happened Now and understood. nowadays. The brother asking a question that वो लड़का बोला, या कुरान कहता है कि एक इंसान है जिसकी तरफ से भेजा गया है, खुदा या ये इख्तियार दे कि खुदा जो एक शख्स को मार डाले जो कुछ भी उसके पास है। वो मैंने गुनाह किया है या भारी गुनाह भी किए हैं, तो जैसा कि मैंने कहा अल्लाह ताला इस शख्स को अज़ियत देता है जो इंसान को अज़ियत देता है। मखलूक तो ये मेरा सवाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दोबारा सवाल दोहराएं। So, if there is any written in the book that, or in the Quran says that there is a one person, a human being, sent by God or give the authority that God that kills a person, whatever this person has sinned or even the heavy sins. So, according as what I said, Allah Almighty tortures the person who tortures human beings. So that is my question. what's your question? I didn't understand. Is there any human being that Allah gives permission to kill a person? Just what we did, just what happened Now and understood. nowadays. The brother asking a question that does Allah give permission क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे अल्लाह ताला कत्ल करने की इजाज़त दे? शख्स सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ क्या हुआ और आज कल पूछेंगे। Allah gives permission to kill a person. Just what we did, just what happened Now and understood. nowadays. The brother asking a question that does Allah give permission for you to kill any other human being? The hadith is quoted that if there is a tie, like the hadith, he quoted 3 hadiths. One hadith says that if there is a peace treaty between the Muslims and the others, you have to protect that person. If you don't, then you will not enter Jannah. The second says that you cannot kill a person who is under peace treaty. If you do that, you shall not enter Jannah. All these verses talk about you should not kill any other human being which is under treaty. There's also another verse in the Quran which I quoted in my talk, which is a very important verse in the Quran. In Surah Ma'idah chapter 5 verse number 32, which says that if anyone kills any other human being, whether it be a Muslim or non-Muslim, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. And if he saves any human being, he has saved the whole of nation. So according to the Quran, as well as the Hadith, you cannot kill any innocent human being. And a question, who can you kill? Only that person, as the Quran says, unless you cannot kill any other human, unless he spreads corruption. So if a person spreads corruption in the land, then you can kill him. Do not kill any other human being unless he commits murder. If someone has murdered someone, and then if you murder him, Quran gives permission. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, दूसरा कहता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को कत्ल नहीं कर सकते जो अमन मुआहदे के तहत हो, किसी दूसरे इंसान को कत्ल करो जो मुआहदे के तहत हो। इसके अलावा एक और आयत भी है कुरान मजीद में जो मैंने अभी गुफ्तगू में नकल किया है, जो कि कुरान मजीद की एक अहम आयत है। कोई दूसरा इंसान चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, जब तक कि उसके लिए न हो, कत्ल करना या ज़मीन में फ़साद फैलाना गोया इसने कत्ल किया पूरी इंसानियत, और अगर इसने बचाया किसी भी इंसान को, इसने बचाया है पूरी इंसानियत को। इसलिए कुरान और हदीस के मुताबिक आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते, बेगुनाह इंसान। और आप सवाल करते हैं कि आप किसी को मार सकते हैं। सिर्फ वही शख्स, जैसा कि कुरान कहता है, जब तक कि तुम कत्ल नहीं कर सकते। दूसरी औरत जब तक ज़मीन में फ़साद फैलाता है फिर तुम उसे मार सकते हो, वो करप्शन फैलाता है। तो अगर कोई शख्स किसी दूसरे इंसान को इस वक्त तक कत्ल न करो जब तक कि वो किसी के कत्ल का इर्तिकाब न करे,
کسی کو قتل کیا اور پھر قتل کیا تو قرآن کہتا ہے، قرآن مجید میں اس بات کی اجازت ہے۔ Secondly, if he spreads corruption in the land, for example, if a man goes and rapes a woman, it is spreading corruption. So the penalty in Islam for rape is death penalty. So the only two places where you can kill any other human being is that if he is spreading corruption in the land or if he has committed murder. Spreading corruption can include many things. For example, as I said, committing rape of a woman. So if these two things are there, these two are the only time where death penalty can be given, and the Sharia specifies this, where death penalty can be given. If you read the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there are cases where death penalty can be prescribed. In all the other cases, if you kill any other innocent human being, if he is not spreading corruption in the land, and if he has not committed murder, then it is as though you have killed the whole of humanity. Hope that answers the question. Hope you are convinced. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، دوسرا، اگر ہم کرپشن میں خرچ کرتے ہیں، زمین مثال کے طور پر اگر ایک آدمی جاتا ہے اور عصمت دری ایک عورت یہ کرپشن پھیلا رہی ہے، اسلام میں عصمت دری کی سزا موت ہے، لہذا صرف دو جگہ ہیں جہاں آپ کسی دوسرے انسان کو مار سکتے ہیں، وہ ہے اگر وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، یا اگر اس نے قتل کیا ہے تو وہ فعل پھیلا رہا ہے۔ کرپشن میں بہت سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر میں نے کہا کہ ایک ہی عصمت دری کرنا، عورت تو اگر یہ دو چیزیں ہوں تو یہ دونوں ہی موت کا وقت ہے، سزا دی جا سکتی ہے، اور شریعت وضاحت کرتی ہے کہ وہ جرمانہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں، ایسے معاملات ہیں جہاں یہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے بے گناہ انسان کو قتل کرتے ہیں تو باقی تمام صورتوں میں تجویز کیا جائے گا۔ اگر اس نے زمین میں کرپشن نہیں کی اور اگر اس نے قتل نہیں کیا، پھر یہ ایک سوال ہے، امید ہے کہ آپ کو یقین ہو گیا ہے، جواب سے قائل ہوں گے۔ Think that there is one God and Prophet Muhammad is the messenger, and you repeat it, inshallah, after me. Ashhadu. Can you give the microphone, please? Dr. Mazhar. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Washhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there's no God but Allah, and I bear witness I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, we go Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant all of you Jannah, inshallah. اس طرح یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah grant all these for the Jannah, and through them may He guide other peoples to the straight path of Islam. Jazakallah.